Hello everyone, welcome back to Study Philia Education. Today we are going to learn Unit 7, and in this unit we are going to ask some questions like how did the Harappan civilization decline and what are the different kind of theories put forward by scholars about the decline of Harappan civilization. Over the years, scholars thought that हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड अ सडन डिसअपियरेंस, तो उन्होंने कभी उसके डिक्लाइन को डीप में पढ़ने की कोशिश की ही नहीं, क्योंकि उनको लगा था कि सिविलाइजेशन एकदम से खत्म हो गई. बट थोड़े सालों बाद जब रिसर्च कंटिन्यू करने की कोशिश हुई और बहुत सारी रिसर्च चालू हुई, तब उन्हें पता चला कि वी सी evidences of survival as well as continuities of Harappan civilization at different sites. तो कोई sudden disappearance नहीं था. कुछ sites में देखा गया था, but हर जगह this disappearance was not as sudden as the scholars thought before. We see signs of decline. We see that there is survival as well as continuities of the Harappan civilization. In the previous lecture, we discussed the different aspects of mature Harappan phase, in which we see that it had writing, town planning, and especially the most important of all, that is uniformity. But how did that transition from mature to late Harappan phase took place, and why so many sites declined? The uniformity declined, the craft production declined. हम देखते हैं हर चीजों में एक ना एक तरीका, हर एस्पेक्ट जो मैच्योर हड़प्पन फेज में था वो लेट हड़प्पन फेज में आते आते वो सब डिक्लाइन, वो सब डिसअपियर होने लगते हैं धीरे धीरे करके. So in the late Harappan phase, in the sites like Harappa, Mohenjo-daro, Kalibangan, इन सब sites में हम एक decline देखते हैं urban planning में. So mature phase में urban planning was very important. We saw that they had a advanced drainage system. They had houses that were well planned, streets were well planned, pipes, water management was there, everything was there. But in the later phase हम देखते हैं कि urban planning और construction especially इन दो चीजों में एक decline दिखता है. Houses are made of old dilapidated bricks. Dilapidated मतलब उबड़ खाबड़ ईंटों से घर बनने लगे. हमने मच्योर फेस में देखा था कि जो ईंटें यूज करते थे देवर ऑफ अ स्टैंडर्डाइज रेशियो दैट वाज ऑफ 1:2:4. इस रेशियो में ईंटें बनती थी, या 1:2:3 वाले में. बट इन द लेटर फेस वी सी दैट उबड़ खाबड़ ईंटें इस्तेमाल करी गई हैं, एंड कंस्ट्रक्शन हैज बीन अनक्रोच अपॉन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन. मतलब मैच्योर फेज में एकदम स्ट्रीट का लेआउट होता था नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, बट अब हम देखते हैं कि सड़कों पे ही घर बनने लगे हैं. वी सी फ्लिम्सी फ्लिम्सी पार्टीशन सब डिवाइडेड द कोर्टयार्ड्स ऑफ द हाउसेस. फ्लिम्सी मतलब जो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं हो, जो आसानी से जिन्हें हम डैमेज कर सके, उसका मतलब होता है फ्लिम्सी, जो इजीली डैमेज हो सके. तो ऐसे पार्टीशंस कोर्टयार्ड को डिवाइड कर रहे थे या हाउसेस को डिवाइड कर रहे थे. इन मोहनजोदारो in Mohenjo-daro, we see that entry point to the Great Bath was blocked. एंड समटाइम्स लेटर जो ग्रेट बाथ और ग्रैनरी, दो इतने एडवांस्ड और इतने वेल बिल्ड स्ट्रक्चर्स थे, दे बिकेम फेल इनटू टोटल डिसयूज. उनका कोई इस्तेमाल नहीं बचा, कोई उन्हें यूज नहीं कर रहा था. वी सी अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्कल्पचर्स, फिगरीन्स, बैंगल्स, बीड्स एंड इनले वर्क. सो वी सी अ रिडक्शन, एक डिक्लाइन देखते हैं. इट्स नॉट अ सडन डिसअपियरेंस, वी सी अ डिक्लाइन, and decline in not just numbers of these artworks like sculptures, figurines, bangles. इनका सिर्फ numbers में ही हम decline नहीं देखते, हम इनकी quality में भी decline देखते हैं. जैसे for example ये these clay bull figurines, the one on the left hand side is from the, this one is from the mature Harappan phase and this one is from the later Harappan phase. So we found clay bull figurines. These both represent bull, but जो mature phase में दिखती है, it was of a superb quality, which with exceptional craftsmanship we see in the mature phase. But ये figurines इतनी अच्छी क्वालिटी की हमको लेटर फेज में नहीं दिखती है. हमको कुछ कुछ आर्टवर्क्स दिखते हैं, बट दे आर नॉट दैट गुड इन क्वालिटी.
Towards the end, Mohenjo-daro shrank to a small settlement of 3 hectares from the original of 85 hectares. Harappa, Kalibangan, Chanudaro, they all showed different signs of decline. So, Harappa seems to have witnessed arrival of a group of people about we know through their burial practices. So, uh, a group of people started arriving at Harappa, and we know that there are different group of people from the ones जो पहले हरप्पा में रह रहे थे through their burial practices, because they had different burial practices. How? They were using a kind of pottery. So in the map we see here symmetry edge culture. In the late Harappan phase, we see this symmetry edge culture. So they were using a pottery of the symmetry edge culture. So their pottery and their burial methods were very different from the people who were originally or before them living in Harappa. So उनका pottery में हम difference देखते हैं as well as in burial practices. And later on, in the end, we see that cities like Harappa and Mohenjo-daro, they were abandoned altogether. तो पहले तो उनका size छोटा हो गया, like Mohenjo-daro shrank from 85 hectares to 3 hectares, और थोड़े टाइम बाद वो sites fully abandoned करी जा चुकी होती हैं. Now, the population seems to have either perished or moved away to other areas. Two type of decline we see कि पॉपुलेशन उस जगह की पूरी ही खत्म हो जाती है या तो पॉपुलेशन शिफ्ट कर जाती है इनटू न्यूअर एरियाज. Whereas when we see Harappa, Mohenjo-daro and Chanudaro. These three sites, this triangle, they show decline in the number of settlements. ठीक है, इधर हम देखते हैं हरप्पा, मोहनजोदारो, चानुजारो, ये जो 3 साइट्स है इसमें हम देखते हैं कि सेटलमेंट के नंबर में डिक्लाइन दिख रहा है. बट व्हेन वी कम टू द वेस्टर्न एरिया, थोड़ा नीचे, गुजरात, ईस्ट पंजाब एंड हरियाणा, ये साइट्स देखते हैं हम गुजरात में, इनमें हम देखते हैं कि there is an increased number of sites. We see a phenomenal increase in the number of people in these area. And there is one theory that ये 3 sites हरप्पा, मोहनजोदारो एंड चानुदारो में डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन का एज वेल एज सेटलमेंट का, और एट द सेम टाइम ये 3 साइट्स हरियाणा में, पंजाब में और गुजरात में जो कुछ कुछ साइट्स है उसमें हम पॉपुलेशन इंक्रीज देख रहे हैं. तो एक ऐसी थ्योरी है जो बोलती है कि एमिग्रेशन ऑफ पीपल हैपेंड, like people moved from these core regions of Harappa, Mohenjo-daro and Chanudaro to the different regions जो थोड़े बाउंड्री पे हैं. सो कोर से मतलब सेंटर से लोग बाहर की साइड एमिग्रेट कर रहे थे. In other areas like Gujarat, Rajasthan and Punjab, people continue to live, but the life pattern or their lifestyle changed. Some of the important features that are associated with the mature Harappan phase, like unka writing, the weights and measures that we learned about, the Harappan pottery, their architectural style, everything disappeared. We see that the abandonment of the cities of the Indus is roughly dated around 800 BCE, and this date is supported by the fact that Mesopotamian literature stopped referring to Meluha by the end of the 1900 BC. We learned about the theory that Mesopotamian literature mentions 3 sites, and one of them is Meluha, which can be or which is assumed to be, although some scholars don't agree, but कुछ scholars ऐसा मानते हैं कि जो मेलुआ साइट थी वो हरप्पन साइट हो सकती है, कोई भी, क्योंकि वो जो आइटम्स एक्सपोर्ट कर रही थी मेसोपोटामिया को, वो आइटम्स थे जो हरप्पा में मिलते थे. सो वी सी दैट जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट भी है वो मेलुहा का रेफरेंस 1900 BC के बाद उधर नहीं दिखता है, एंड दिस इज वन ऑफ दोज मेसोपोटामियन टेक्स्ट दैट मेंशन्ड मेलुहा in their inscription, but हमको 1900 BC के बाद ऐसा कोई भी reference नहीं दिखता है. Now let us study the different theories of decline. There are 4 theories of decline. First है कि एक बहुत massive flood आया, and every theory, these 4 theories सबका एक theory है और उन theories का criticism भी है. Like no theory is perfect, no theory is absolutely true.
हर थ्योरी का अपना, स्कॉलर्स ने उसको क्रिटिसाइज भी किया है, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. तो फर्स्ट इज दैट द साइट्स वर डिस्ट्रॉयड बाय अ मैसिव फ्लड. द सेकेंड थ्योरी इज दैट जो घाघर हकरा रिवर सिस्टम है वो ड्राई होने लगा, लाइक रिवर बेड्स वर ड्राइंग, द रिवर वॉज ड्राइंग, और या तो रिवर ने अपना कोर्स शिफ्ट कर लिया. थर्ड थ्योरी इज कि देर वॉज अ बारबेरियन इन्वेजन दैट डिस्ट्रॉयड द सिटीज. एंड फोर्थ थ्योरी, दैट इज द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस थ्योरी भी बोलते हैं इसे, विच इज वाइडली एक्सेप्टेड. इन चारों में से ये फोर्थ थ्योरी है जो जिसका इतना क्रिटिसिज्म नहीं है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस थ्योरी. And this is one of the theories that is widely accepted. This theory says that the growing demands of the centers like Harappa, Mohenjo-daro and Chanudaro, these were the centers of the Indus civilization. तो इनमें इतनी डिमांड थी कि वो इकोलॉजी जो है, उधर का फ्लोरा फोना, लाइक उधर का नदी, उधर के एनिमल्स, उधर का सॉइल, इट कुड नॉट टॉलरेट, इट कुड नॉट, it was disturbed, and the ecology and the area could not support these sites anymore. So various ecological imbalances happened, and we are going to see what kind of ecological imbalances happened. So let us study the first theory, that is of flooding and earthquakes. So in Mohenjo-daro, evidences shows that flood led to temporary desertion and reoccupation of city throughout the history. तो मोहनजोदारो जो ये साइट है, particularly मोहनजोदारो में हम देखते हैं through excavations, various level of soils were excavated, and through that we see that फ्लड्स बहुत बार आए हैं मोहनजोदारो में, और फ्लड्स के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, जैसा अभी भी होता है, तो वो रिकंस्ट्रक्शन भी बहुत बार हुआ है मोहनजोदारो में. एंड दिस कैन बी इन्फर्ड, जब एक्सकवेशन हुआ था तो जो हाउसेज और स्ट्रीट्स है, दे वर कवर्ड विद अ सिल्टी क्ले टाइप मटेरियल, which shows that the building material may have collapsed a lot of times in the history. The people of Mohenjo-daro again build up their houses and on the top of the streets, on the top of this debris of the previous buildings after the flood has receded. Now there is Reiki's hypothesis. So the theory of catastrophic flooding has been carried out further by a famous hydrologist, R.L. Reikis. He argued that such flooding could drown buildings of 30 feet and above, and he believed that the Harappan civilization, he was talking about the entire Harappan civilization. He said कि जो पूरा हरप्पन सिविलाइजेशन है, इट डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ दीज कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग दैट कॉज्ड इन फ्लडिंग्स, जो इतनी कैटास्ट्रोफिक, इतनी भयंकर जो फ्लड्स आए, उन्होंने पूरी सिटीज को सबमर्ज कर दिया. एंड क्योंकि सिटीज इंडस रिवर बैंक के ही आसपास लोकेटेड थी, तो उन फ्लड्स ने सारी सिटीज को सबमर्ज कर दिया. He has shown geomorphologically that the Indus area is a disturbed seismic zone. A disturbed seismic zone मतलब that it was prone to earthquake. उधर earthquakes आते ही रहते थे. So in earthquakes ने उन floods को और भी खतरनाक बना दिया था. That was his theory. These violent earthquakes, these damming rivers, and the burning of towns destroyed the Harappan civilization. This led to disruption of commercial life, which was based on river and coastal communication. So this was Reiki's hypothesis. It's just a hypothesis. अब इसका criticism भी है, ठीक है. Criticism इसका बहुत सारा है. H.T. Lambrix points out that a river would be dammed in such a manner even by tectonic uplifts is incorrect due to two reasons. So बेशक वो उस एरिया में अर्थक्वेक आते थे, और अर्थक्वेक की वजह से फ्लड्स बहुत सारा डैमेज करते थे, एक्स्ट्रा डैमेज वाज सीन, बट इतना डैमेज नहीं हो सकता था. H.T. Lambrix इज सेइंग. There is another criticism of this theory, and that criticism is कि
जो आरएल रेकीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल सारी हरप्पन पूरी सारी साइट्स में तो फ्लड्स नहीं आए थे इंडस सिविलाइजेशन के, और हरप्पा में भी अगर फ्लड्स आए हो तो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती कि सेटलमेंट्स आउटसाइड द इंडस सिस्टम जो रिवर बैंक्स पे नहीं लोकेटेड थी वो भी डिक्लाइन हुई, तो ये थ्योरी जो है उनका डिक्लाइन एक्सप्लेन नहीं करती है. इट टॉक्स अबाउट ओनली अ फ्यू रीजन्स that were located on the bank of Indus River. Now let us study a different theory that is about the shifting away of the river Indus. So Lambrick has offered his own explanation. He believes that जो इंडस रिवर है उसने अपना कोर्स, वो जहां बहती थी उसने अपना कोर्स शिफ्ट कर लिया और इसकी वजह से मोहनजोदारो का डिस्ट्रक्शन हो गया. But the criticism of this theory is that this theory also, like राइकिस की जो थ्योरी पढ़ी वो भी पूरी सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन एक्सप्लेन नहीं करती, और ये थ्योरी भी कैन नॉट एक्सप्लेन एंड इट डज नॉट explain the destruction of the Harappan civilization in totality. At best, it can only explain the desertation of Mohenjo-daro. ये जो थ्योरी है रिवर चेंजिंग इट्स कोर्स, ये ओनली एक्सप्लेन कर सकती है कि मोहनजोदारो में डिक्लाइन कैसे हुआ. इतनी सारी साइट्स में जो हम डिक्लाइन देखते हैं इंडस सिविलाइजेशन की, इट डज नॉट एक्सप्लेन दैट. नाउ देयर इज अनदर थ्योरी that there was drying up of the river Ghagar. So D.P. Agrawal and Sood, they said that D.P. Agrawal and Sood, they said that Harappan civilization declined because there was increasing aridity in the area and drying up of the river Ghagar. ठीक है, they have discussed the problem of the unstable river system in the western Rajasthan. As stated earlier that Ghagar Hakra area presented one of the core regions of Harappan civilization. The Ghagar was a mighty stream flowing through Punjab, Rajasthan and the run of Kutch. So can you locate Ghagar Hakra in the map? This is Ghagar. Here it is. And Hakra, ये रहे. So he says that how घाघर ड्राइड अप, एंड वो एक्सप्लेन भी करते हैं कि घाघर और हकरा ये जो रिवर सिस्टम से ये कैसे ड्राइड अप हो गए या इनका कोर्स कैसे चेंज हो गया. तो जो सतलुज और यमुना रिवर है, ये रही सतलुज और ये रही यमुना. तो जो सतलुज और यमुना रिवर है, दे यूज टू बी ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर, घाघर और हकरा की. ठीक है, बट द सतलुज स्ट्रीम वॉज कैप्चर्ड बाय इंडस रिवर. तो सतलुज इंडस रिवर की कोई स्ट्रीम होगी उसमें जाके मिल गई, और यमुना ने भी अपना जो कोर्स है वो शिफ्ट करके ईस्ट में चली गई. ईस्ट मतलब इधर, यमुना इधर शिफ्ट हो गई टू जॉइन द गंगा. So this kind of changes in the river system were happening, and this kind of changes made the Ghagar river waterless. This is the theory of D.P. Agarwal and Sood. Now there is criticism of this theory as well, and the criticism is that the theory talks about the onset of arid condition has not been fully worked out. जो एरिड कंडीशंस की बात करें, इस पे इतना रिसर्च नहीं हुआ है, एंड वी नीड मोर इंफॉर्मेशन. एंड सिमिलरली दे से दैट द घाघर रिवर ड्राइड अप, बट ड्राइंग अप ऑफ घाघर रिवर हैज नॉट बीन डेटेड प्रॉपरली येट. इसका कोई डेट हमें नहीं मिला है थ्रू एक्सकेवेशन. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज बारबेरियन इन्वेजन. सो व्हीलर believed that Harappan civilization was destroyed by the Aryan invaders. Who are Aryans? We'll learn about them in the next unit, but let us see. It is pointed out that the late phases of occupation in Mohenjo-daro में जब हम देखते हैं, there are evidences of massacres. What are these evidences of massacres? We see that human skeletons in large amount have been found lying on the street. The Rigved refers to this time
as the fortresses of Dasas and Dasyus. So Dasas ऋग्वेद में इस समय पे कहा गया है कि इस टाइम पीरियड में दासास एंड दास्यूस ये एरिया में रहते थे. Aryans fought a battle here, and the name of the place sounds very similar to that of Harappa. So, in fact, what is this place that sounds familiar to Harappa? Hariyupia. Rigveda mentioned a place called Hariyupia, और ये हरप्पा से इसका नाम थोड़ा सिमिलर है. So, there was this place which was located on the bank of river Ravi, known as Hariyupia, and Rigveda says that Aryan fought a battle here. These evidences led Mortimer Wheeler to believe that Aryan invaders were the one who destroyed the Harappan cities. Now, the criticism of this theory is that although this theory is very attractive, it is not acceptable by a host of scholars. They point out that the provisional date, अभी यहाँ पे डेटिंग की बात हो रही है, वो कह रहे हैं, स्कॉलर्स कह रहे हैं कि जो डिक्लाइन ऑफ हरप्पन हम देखते हैं वो 1800 बीसी से देखते हैं. बट ऑन द अदर हैंड आर्यंस 1500 बीसी तक, इस टाइम तक तो आए ही नहीं थे. They didn't arrive here before 1500 BC. 1500 BC के बाद ही हम आर्यंस का मूवमेंट देखते हैं. So, neither Mohenjo-daro nor Harappa yield any other evidence of military assault. So, skeletons मिलते हैं हमें मोहनजोदारो में, बट मिलिट्री असॉल्ट का हमको कोई एविडेंस नहीं दिखता है. ये है बारबेरियन इन्वेजन थ्योरी का क्रिटिसिज्म. So let us now see the next theory, that is ecological imbalance. Now scholars like Fire Service, they tried to explain the decay of Harappan civilization in terms of the problem of ecology. So ecology is the study of the interaction between the biotic and abiotic factors of the environment. So he's saying that environment के different factors they interacted और उन्हें उनकी problems की वजह से we see a decline. So he computed that villagers in these areas, जो हरप्पन cities हैं, उधर वो जो food requirement जो भी होती थी, उधर 80% of their produce, जो भी वो produce करते थे, उसमें से जो विलेजर्स थे हरप्पन सिटीज में वो 80% तो खुद के लिए रखते थे और 20% दे यूज्ड टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट. If similar patterns of agriculture, this is the agriculture pattern that Fraser-Weiss is talking about, where 80% was, मतलब वो खुद के लिए ही प्रोड्यूस करते थे मेजरली, जो बचा कुछ जो थोड़ा सा होता था वो मार्केट में सेल करते थे. सो इस एग्रीकल्चर पैटर्न के बेसिस पे मॉर्टिमर व्हीलर ने पॉपुलेशन एस्टिमेट की ऑफ मोहनजोदारो, दैट वाज ऑफ 35,000. सो अकॉर्डिंग टू फेयर-सर्विस कैलकुलेशन, अगर मोहनजोदारो की पॉपुलेशन है 35,000, तो इट हैड, वो पॉपुलेशन की वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस तो हुआ ही होगा, बिकॉज ह्यूमन एंड कैटल पॉपुलेशन इन दीज एरियाज आर फास्ट डिप्लीटिंग the scanty forest, food and fuel resources. So पहले से जो एरिया है जहाँ पे ये सेटलमेंट्स है, ये एक सेमी एरिड एरिया है, प्लस उधर का ह्यूमन और कैटल पॉपुलेशन वो तो बढ़ता ही जा रहा है, ऊपर से वो जो ये रिसोर्सेस है जैसे फूड फ्यूल और फॉरेस्ट, ये रिसोर्सेस को वो कंज्यूम कर रहे हैं और उनकी वजह से ये रिसोर्सेस डिप्लीट हो रही है. डिप्लीट मतलब कम होती जा रही है. सो the need of the Harappan townsmen, peasants and pastoralists exceeded their production capacities. So need of the Harappan people, Harappan townsmen, was more than the production capacity of the area. City of the area. So population तो बढ़ती ही जा रही थी, but on the other hand resources जैसे forest है, grass है, these were
disappearing, and there were more floods and droughts. So there is an ecological imbalance. This depletion had led to a strain on the entire economy of the civilization, and this is the reason why Faisalweiss is saying that इस reason की वजह से, ये imbalance की वजह से, we see that people are moving away from these center cities and they are moving to different areas. This is why the Harappan communities moved towards Gujarat and the eastern area away from the Indus. So of इस theory का इतना criticism नहीं है, क्योंकि of all the theories that we have discussed before, ये theory, the theory of ecological imbalance, seems the most plausible one. ठीक है. However, the theory of environmental disaster also has some problem, because the enduring fertility of the soil of the Indian subcontinent over the subsequent millennia disapproves the hypothesis of soil exhaustion. So जो ये area है इंडस रिवर का, ये अभी भी बहुत fertile है. हम सब we know that this is the food bank. Like इधर से most of the crops जो इंडस रिवर एरिया है, ये इतना fertile है अभी कि कंट्री के लिए in Pakistan as well as in India, जो पंजाब हरियाणा वाला region, it is very fertile and it produces the crops like cereals for the whole country. इतना fertile है अभी. So अभी के उस रिसर्च के हिसाब से देखें, अभी के सॉइल फर्टिलिटी के हिसाब से देखें, तो इट इज वेरी इम्प्रॉबेबल कि उस टाइम पे फर्टिलिटी इतनी कम हो जाए. Now let us learn about these were the different theories. Now let us learn about the tradition that survived. So there is a difference in the thinking of the scholars before and after the 1960s. So the debate about the causes of decline of Harappan civilization became more and more abstract. It was towards the end of the 60s. Like scholars like Malik and Possehl focused their attention on various aspects of continuity of Harappan civilization. These studies yielded more results which were very exciting and about the causes or the decline of the Harappan civilization. So, what was lost? First, we know that in the late Harappan phase, when we see that, what were the things, what were the important aspects of the mature Harappan phase that were not found in the later Harappan phase? So, we see that the tradition of uniform writing, seals, weights, pottery, these type of traditions were lost in the late Harappan phase. But on the other hand, areas like Gujarat, Rajasthan, Haryana, we see that vibrant agriculture communities emerge in large number. So let us see area-wise. We'll study all these areas in details. First, we'll study Sindh. So Sindh, at the Harappan towns of Amri and Chanudaro, people continue to live as of old. Okay, so now we are going to study in detail of different areas of the Harappan civilization of the later phase, in which we see that जो tradition है वो continue कैसे हो रहा है Harappan civilization का, क्योंकि there is no sudden declinement, the tradition is continuing. So हम देखेंगे कि वो continuation कैसे हो रहा है और Harappan civilization की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी भी later phase में भी कुछ कुछ aspects हैं, कुछ कुछ traditions है जो हमें देखने को मिलते हैं. So in Amri and Chanudaro, we see that people continue to live as of the old times. They were still staying in brick houses, but they gave up the planned layout. So what survived of the mature phase? Brick houses अभी भी थे उधर, but planning नहीं है. They used a different type of pottery called the Jhukar pottery. It was a buffware with a red slip with paintings in black. Circular stamp seals of stone or faience and bronze and cosmetic jars are also indicative of contacts of the culture with the culture to the west of the Indus. So, हमें इन साइड से इवन इन द लेटर फेज हमको सील्स और फाइंस और ब्रॉन्ज के
ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेड पूरा बंद हो गया था। इन ऑब्जेक्ट से हमें पता चलता है कि ट्रेड जो इंडस रिवर है उसके वेस्ट का जो एरिया है उधर से इनके ट्रेड रिलेशंस अभी भी थे। नाउ लेट अस लुक एट पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. So, in Punjab, Haryana, and Rajasthan, several settlements have been reported where people continue to live in the same way after the decline of civilization. So, after the date of, मतलब the period of decline, when the period of decline started, there were some sites जहाँ पे लोग अभी भी पुराने तरीकों से ही रह रहे थे. But what declines are there? What are the some signs of decline? We know that the Harappan influences on pottery traditions gradually declines, and local traditions which are always present, they started replacing Harappan pottery traditions. So mature phase में local traditions भी थे और हरप्पन ट्रेडिशंस भी थे. पॉटरी के दो तरीके के ट्रेडिशंस थे जो साइमल्टेनियसली प्रेजेंट थे इन द मेच्योर फेज. बट अब लेटर फेज में जाते हैं तो जो हरप्पन पॉटरी ट्रेडिशन है वो डिक्लाइन होता है, और जो लोकल ट्रेडिशंस है इन एरियाज के, दे टेक प्लेस ऑफ दीज हरप्पन ट्रेडिशंस. तो उनको रिप्लेस कर देते हैं और लोकल पॉटरी ट्रेडिशंस हमको देखने को मिलते हैं. साइट्स लाइक मीठाथल, Bara, Ropar and Siswal are well known. Brick houses has been reported from Bara and Siswal, and in many sites we see ochre color pottery. This pottery underlay many historical sites in ancient India. In the upper Gangetic Valley also, many agricultural settlements were established. They show remote late Harappan influences. So, new agriculture settlements were being established in the upper Gangetic Valley, and they show some very little influences of the Harappan times. Now, let us look at the area in the west, Kutch and Saurashtra. So, in Kutch and Saurashtra, the end of urban phase is clearly documented in places like Rangapur and Somnath. Even during the urban phase, they had a local ceramic tradition coexisting with the Harappan pottery. So same with Punjab and those sides, उधर भी local tradition था plus Harappan pottery थी. इनके यहाँ भी local tradition was coexisting with the Harappan pottery. हरप्पन पॉटरी तो डिक्लाइन होती रही, बट जो लोकल ट्रेडिशन था इट कंटिन्यूड इन द लेटर फेजेस एज वेल. दे वर यूजिंग पॉटरीज कॉल्ड द लस्ट्रस रेड वेयर. They were using pottery called the lustrous red ware. However, what were the signs of decline? The people in this area of Kutch and Saurashtra, they stopped using the Indus weights, scrapes, tools that were imported from the distant areas. Now they were using stone tools made of locally available stones. So इससे क्या पता चलता है कि long distance trade जो था उसका decline हुआ इन areas में. जो stone, जो tools, अब जो weight और script के लिए जो material चाहिए था, जो स्टोन चाहिए थे, वो अब लोकली रिसोर्स करते थे, वो आसपास के एरिया से ना कि दूर से मंगाते थे. In the mature Harappan phase, there were 13 settlements in Gujarat, and in the late Harappan phase, the number of settlement went to 13 say 200. So we see an increase in settlement. This increase in number of settlements indicating an increase in population cannot be explained by biological factors. Now let us see the transmission of the Harappan tradition. The end of cities did not mean the end of Harappan tradition. This is very important. Harappan cities, जो Harappan major sites थी, population decline हुई, major sites जो थी वो उनमें डिक्लाइन हुआ, जैसे मोहनजोदारो, हरप्पा, चानुदारा. बट वी डू नॉट सी द एंड ऑफ हरप्पन ट्रेडिशन ऑल टुगेदर. क्या एंड हुआ? सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग इन द पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जो हमने इकोनॉमी पढ़ती, ये सब चीजें एंड हुई. बट देर वर सम ट्रेडिशंस ऑफ द हरप्पन विच कंटिन्यूड. It is likely that Harappan peasants would retain their forms of worship. The priests of the Harappan urban centers were a part of highly organized literature tradition.
Even if the literacy ended, they are likely to be preserved in their religious practices. The dominant community of the subsequent early historical period called itself the Aryans. Possibly the priest groups of Harappans merged into the ruling groups of Aryans. So this is a very important theory. They are saying that जो प्रीस्ट थे वो हरप्पन साइट्स में, जो हरप्पन सिटीज थी उसमें प्रीस्ट वर वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो दे आर सेइंग दैट व्हेन द आर्यंस केम, दीज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे प्रीस्टली ग्रुप वो आर्यंस के साथ मर्ज हो गया, एंड दैट इज हाउ जो हरप्पन रिलीजियस ट्रेडिशन है वो ट्रांसमिट होता गया. मतलब वो ट्रेडिशन एक तो न्यू कल्चर के साथ जो आर्यन ट्रेडिशन था उसके साथ मर्ज हो गया, एंड इस मर्जर की वजह से वो जनरेशन टू जनरेशन जो हरप्पन ट्रेडिशन है इट ट्रांसमिटेड, वो चलता आगे बढ़ता गया इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. The folk communities also retained the tradition of craftsmanship, as is evident from the pottery and tool making tradition. Now let us study what survived from the हरप्पन. हमने देखा कि जो शिफ्ट है फ्रॉम द मच्योर टू लेट फेज, हम बहुत चीजों में डिक्लाइन देखते हैं, जैसे क्राफ्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, ट्रेड, इन सब चीजों में डिक्लाइन देते हैं, पॉपुलेशन में डिक्लाइन दिखते हैं. बट कुछ चीजें हैं जो हरप्पन सिविलाइजेशन की सरवाइव कर जाती हैं उसके डिक्लाइन होने के बाद भी. सो दीज आर द कल्ट ऑफ शिवा और पशुपति एंड ऑफ द मदर गॉडेस seem to have come down to us from the Harappan tradition. Similarly, the cult of sacred places, river or trees show that there is a continuity of the Harappan tradition in the civilization of India. We see evidence of fire worship and sacrifice in Kalibhangan and Lothal is significant. These were the most significant element of the Vedic religion. Now, in the next unit, when we will study the Vedic religion, we will come to know that sacrifices are a very important part of the Vedic religion, and the Agni, the king, the god of fire, is also plays a very important role in the early Vedic literature, that is in the Rig Ved. So we see that evidence of fire worship and sacrifice ये हमें कालीबंगन और लोथल में दिखे थे. और हम जब वैदिक पीरियड में आते हैं, we see that यही sacrifices and fire worship becomes very important in the Vedic period as well. So there is a theory that ये जो traditions है of worshipping the fire and sacrifices, it's just a question कि क्या आर्यंस ने ये सब practices from the Harappan priesthood उनसे सीखी थी. Many aspects of the domestic life, like the house plants, disposition of water supply, and attention to the bathing, survived in the settlements of the subsequent period. The traditional weights and currency system of India, based on the ratio of 16 as the unit, was already present in the Harappan civilization. और there is a theory that हमने जो ये weights और measures का system है, we might have derived this system from the Harappan civilization. The technique of making potter's wheel in modern India is similar to that of used by Harappan civilization. So various techniques that were seen in the later period of the Indian civilization, that is pottery or the weights and measures, there is a theory that we have derived these from the Harappan civilization only. And that is how the traditions of the Harappan civilization continued even in the later phase. If you have any question, you can ask them in the comment box. Thank you.